Welcome, everyone, to the first episode of Chai and Biskoot. I'm your guest host today. My name is Sadi Raza. I'm here in Dallas, Texas. And with me today are two people who need no introduction, but we'll get a short one anyway. I have with me Mr. Yang, who is the famous self-proclaimed king of spaces. You all have interacted with him on Twitter, both directly, indirectly, behind his back, in front of his face, all sorts. And of course, Parmeet, who is also ubiquitous on Twitter, both in Arsenal spaces, in cricket spaces, singing spaces, and so on and so forth. This is going to be the 128th review of the upcoming World Cup. There have been lots of them done. Ours is special because these two gentlemen are very underrated in their opinions and knowledge about cricket. Before we start, how are you two today? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है. And आप, Mr. Yang? बहुत देखे काफी लोग स्पेसेस आजकल का पॉडकास्ट मुझे क्योंकि स्पेसेस बोलने की आदत हो गई है, सो प्लीज आई बेग योर पार्डन, लेकिन मुझे काफी लोग पॉडकास्ट पे नहीं बुलाते, इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना शुरू कर दूंगा. तो अब पहले तो मैं सिर्फ स्पेसेस का किंग होता था, अब मैं पॉडकास्ट का भी किंग बन जाऊंगा जल्द. आपको लगता है मिस्टर यांग कि आप थर्ड ड्राइव से ज्यादा व्यूज ले सकते हैं पॉडकास्टिंग की दुनिया में? आप देखें, लोग अगर सुनना चाहते हैं मुझे, तो मैं क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा कोई मसला होगा. The world is his oyster, Parmeet. अच्छा, मैं briefly ये कह दूं कि मेरी cricket की knowledge is very casual. So my role is basically more as a facilitator. If this was a space on soccer, American football, baseball, basketball, I could contribute. Lekin meri cricket ki knowledge is more limited, so I will leave it up to these two young men to talk. So pehla sawal ye कि can we do a quick review of the 15 million warm-up matches that Pakistan played in the weeks and months leading up to this World Cup? What were your takeaways, your three big takeaways, each of you? यार, जो पहले 14 मिलियन वार्म अप मैचेस थे उसमें तो आई थिंक कोई टेक अवे नहीं था. जो आखिरी 1 मिलियन मैचेस थे उनका थोड़ा फायदा हो गया, क्योंकि आपकी टीम को थोड़ा रियलाइज हो गया कि आपके जो फॉर्मल कह लें या ओल्ड स्कूल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, या जिनको आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन समझते हैं, ये इफ्ती चाचा एंड खुशदिल एंड व्हाटएवर, they aren't your best options currently. They gave Heather, Nawaz, Shadab chance at the top and they performed. So I think that's the biggest thing. I just hope they keep the flexibility, because there is no point being flexible and creative in these warm-up matches if you can't exercise those same tactics in a real game. So that's number one. सेकंड टेक अवे ये है कि चलें, जब तक मैं बाकी दो सोचूं, मैं मिस्टर यांग को मौका देता हूं कि वो अपना पहला टेक अवे शेयर करें. यार देखें, बिल्कुल सही बात की है सादी अंकल ने, बिल्कुल सही बात की है कि जितने भी इतने ज्यादा जो वार्म अप मैचेस हुए हैं उसके अंदर आपने क्या सीखा क्या? अनफॉर्चुनेटली मुझे तो कोई ज्यादा कोई लर्निंग मुझे नजर नहीं आई. एक तो आपने जो सीरीज आपकी थी वर्सेस इंग्लैंड, वो 7 T20s थे, ठीक है ना, उसमें क्या कहते हैं, बल्कि इंग्लैंड की टीम थी वो फिर भी क्या कहते हैं, काफी उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, काफी उनके जो होल्स थे टीम के अंदर, जो उनको लग रहा था कि मतलब कि जब हमारी मेन टीम शुरू होगी तो हम कैसे करेंगे और क्या, मतलब कितनी डिफरेंट है उनकी टीम, और उनको फ्यूचर की तरफ भी उन्होंने देखा है, सिर्फ इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं बल्कि फ्यूचर की तरफ भी. लेकिन पाकिस्तान का अगर आप देखें तो सेम उनका जो पैटर्न है वो रहा है इसमें, और जो क्या कहते हैं कंडीशंस थी वो कोई जमीन आसमान का फर्क है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की. लेकिन मेरे ख्याल से कि जो न्यूजीलैंड वाली जो ट्राई सीरीज हुई थी उससे काफी कुछ हमें पता चल गया है. कि एक चीज से पता चल गई है कि इधर कि ऑस्ट्रेलिया में, और जो मैंने नोटिस भी किया कि इधर आपको
गैप्स जरूर ढूंढने पड़ेंगे। इधर आपको स्ट्राइक रोटेशन की बहुत जरूरत है। इधर आप छक्के मारेंगे, छक्के हो सकता है मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो रिंग भी क्लियर मत करे, वो क्या कहते हैं रिंग क्लियर कर लेगी लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो शायद छक्के तक ना जाए कोई। So you were getting too long-winded. I was falling asleep, so let me cut you off there. And so I'll give you the three things that I thought, and you guys can expand on them. That I took away. This is my untrained eye. Number one, I think Harris established himself as the premier death overs bowler. Number two, we saw 5 to 6 overs of Shaheen bowl. He's clearly healthy, his pace is back, and that makes a world of difference. And number three, despite 50 million matches, our middle order is still going to be an issue moving forward. Go on. I think पहला वाला जो आपने बोला, I think that वो तो पहले काफी पुरानी बात है. I think हारिस तो अभी नहीं, वो तो I think कोई काफी टाइम से established है. जो एक दूसरा मुझे टेक अवे थोड़ा like that's a takeaway I had. I don't know if the team realizes this, but Nawaz bowling 4 overs, he'll get wickets because again people try to attack him and he's smart, but he'll also go for, there is chances that he'll go for runs, which is why especially in Australia you won't have grounds that support his type of bowling. So I don't know if they're gonna go with it, but they should play 4 pacers if possible. We're going to come to that. Hold that Okay, thought. We're going to come to sounds that good. question later on. Anything else, Yang, on the review of the warm-up matches? Any big takeaways? मेरे ख्याल से एक जो वही मेरे ख्याल से द बिगेस्ट टेक अवे था आई थिंक शाहीन की थी बॉलिंग के, उसका रन अप काफी मेरे ख्याल से स्मूथ लग रहा था दूसरे इस मैच पे का। मैं इंटरजेक्ट करूंगा मिस्टर यांग, क्योंकि ये काफी ट्विटर के आपके फैंस सुनेंगे. आपने काफी जो ना कॉन्फिडेंटली मुख्तलिफ स्पेसेस पे और मे बी आपने अपनी ट्वीट्स में कहा था कि कोई चांस नहीं है कि शाहीन वर्ल्ड कप Like, खेले. to be fair to Yang, it's very hard to make a case of what actually somebody's injury is when you're dealing with the PCB. So we'll give Sure, him. exactly सही नहीं है. लेकिन मेरे ख्याल से We जो can't be जो मैं sure. बात कर रहा लेकिन था वो मिस्टर कोई यांग बोलने तो दो पहले, नहीं, मैं बोलने मेरे तो दो ख्याल से पहले. जो मैं बात कर रहा था वो अगर आप मैं श्योर नहीं थे तो आपने अपनी बढ़ चढ़ के जोर से क्यों यार बोला? तो आई थिंक यू नीड टू आप मेरी अपोलोजाइज टू बात योर सुनेंगे फैन. तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई बात ऐवी हवाई फायरिंग नहीं कर रहा था। जो मुझे मेरे जो कुछ क्लोज सोर्सेज हैं उन्होंने मुझे कहा था कि उसके फिट होने के चांसेस कम है, लेकिन अभी भी आप क्या कहते हैं देख लें, अभी क्या कहते हैं, अभी टूर्नामेंट काफी बड़ा काफी लंबा है, उसमें पता चल जाएगा कि कितना फिट है कितना नहीं है। अभी उसने 6 ओवर सही करवाए हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ही इज प्रोबेबली बैक टू हिज बेस्ट। लेकिन personally I wouldn't look much into these warm up games. I don't think there's any takeaway. Acha, chale, moving on. Moving on. Let's briefly, and the keyword is briefly, discuss these first round matches. Mr. Yang, I know कि आप बहुत बड़े fan हैं of these associate countries, Namibia, Netherlands, etc. Fan. So the big news there is West Indies is out. It's Sri Lanka and Ireland, and in one group, in the Netherlands and Zimbabwe. What did you review the first round, both of you, and were there anything that we can extrapolate from how those matches happened that we expect in the Super 12? So, for example, in the last T20 Cup, the team that chased it far better. Are there any such big takeaways that we can take from these first round set of matches about conditions? यांग आप पहले जाएंगे? यार आप Yang, please, you have to go first. Yang, you're the big associate guy. अच्छा, तो आई थिंक फर्स्ट राउंड तो मैं पहले ग्रुप ए का मैं बताऊंगा कि ग्रुप ए के अंदर जो मैचेस हुए थे, ये श्रीलंका वाला जो भी मैचेस थे वो जी लॉन्ग में हुए थे। उधर एक भी मैच नहीं है, जो सुपर 12 है सेकंड राउंड है उसका एक भी मैच नहीं है उसके। तो उस कंडीशंस को देख के उधर से मेरे ख्याल से आप ज्यादा कुछ निकाल नहीं सकते कि बिकॉज द कंडीशंस आर वेरी अनलाइक ऑस्ट्रेलियन।
ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं थी, और काफी उसके अंदर जो थे बॉल टर्न भी हो रही थी, इतनी टर्न आपको नजर नहीं आती। बाकी जो बाउंस वगैरह थी वो भी आखिरी जो दिन था उसके अंदर आए थे, मतलब कि जो लास्ट बेसिकली लास्ट गेम डे ऑफ ग्रुप ए था उसके अंदर ज्यादा बाउंस वगैरह पेस वगैरह आई थी, वरना इतनी ज्यादा वो भी नहीं आ रही थी। और एक और चीज जो जी लॉन्ग वाले जो ग्रुप ए से जो मुझे जो नोटिस की है उसकी ये है कि बाउंड्री बहुत लंबी थी। श्रीलंका के जो बैट्समैन थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। उनका जो बिगेस्ट हिटर जो भानु का राजा पक्सा है, जिसने पाकिस्तान को भी अच्छा खासा मतलब के लगाया था, तो वो मेरे ख्याल से उसको भी अगर आप देखें तो सिर्फ 80 मीटर वाली बाउंड्री से क्लियर नहीं हो रही थी ना। उनके कैप्टन शनाका ने मेरे ख्याल से मुश्किलों से शायद एक छक्का लगा दिया। कुसाल मेंडिस लगा रहा था लेकिन वो भी सिर्फ छोटे उधर पे लगा रहा था। तो उस राउंड से मेरे ख्याल से आप कुछ उस जी लॉन्ग वाले कंडीशन से आप कुछ ज्यादा नहीं सीख सकते, लेकिन जो होबार्ट वाला है उधर मैचेस हैं और उधर की जो कंडीशंस थी, आई थिंक दे वर अ बिट मोर सिमिलर, दे वर pretty much Australian, like the Australian conditions, way more truer to Australian conditions. तो मुझे जो लगता है कि उधर की जो पिचेस थी उसके अंदर एक तो बैटिंग के लिए अच्छी थी, ठीक है ना, आपने मैचेस देखे हैं सारे। उसके अंदर अलावा जो ये क्या नाम है, वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे थे, उसके अलावा सारे ऑलमोस्ट सारे चेज हुए थे। और उस वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड जो था, जो मेरे ख्याल से बेसिकली वेस्ट इंडीज सेल्फ इम्प्लोडेड, उनको मुझे नहीं लग रहा था कि उनको इतने बुरे तरीके से हारना चाहिए था, लेकिन दे हार गए। लेकिन द मेन टेक अवे फ्रॉम these both groups is that the boundaries are huge। और इसके अंदर पाकिस्तान को मेरे ख्याल से maybe I'm not sure if they're playing any match in Hobart, लेकिन मेरे ख्याल से उनके जो क्या कहते हैं बाकी भी मेरे ख्याल से मैंने एक वो पोस्ट किया था, उस पर लिखा था कि ट्वीट पोस्ट किया था कि कितने वो है साइज है क्या कहते हैं ग्राउंड्स का, और सारे ऑलमोस्ट सारे ग्राउंड्स में कम से कम एक साइड तो 80 मीटर्स की है। और जो बॉलर्स जो हमने देखा है क्या कर रहे हैं, जो मतलब कि अक्लमंद बॉलर्स हैं जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज ट्राइंग टू ask the batsman to hit the ball towards the longer boundary, and most of the batsmen are failing in doing that। तो I think इस चीज का काफी इस पे होगा। और मेरे ख्याल से about the teams, I think I'll tell that after Mr. Parmeet has to say about what he has to say about this round. Parmeet, can you reply to Yang, and also then just touch on two things? How big a deal is it that West Indies, winner of two of these T20 World Cups with players like Puran, etc., are out? And then the second part is, do you think any of these four teams can upset the four teams that people consider to be the favorites? That's the two subcontinent teams, India, Pakistan, and of course the British and the Australians. Thank you. यार ये तो मिस्टर यांग ने बोला कंक्लूजन इज द बिग बाउंड्रीज, तो काफी फालतू कंक्लूजन थी, ये तो सबको पता है। बहरहाल वेस्ट इंडीज का आपने आप मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आए मैं क्या कह रहा था कि 80 चले बाद में समझा देना ना, अभी आपका टाइम पूरा हो गया है। जहाँ तक वेस्ट इंडीज की बात है तो वो तो आई थिंक जो भी वो जीते थे टीम काफी अलग है अभी, क्योंकि लास्ट टाइम ने उन्होंने 6 years ago even the players that remain in the team they're past their sell-by date, they don't play well anymore। तो वो और बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेलते हैं नहीं साथ, कह रहा कि आई गेस रिसेंटली दे हैव मे बी इन 2022, लेकिन ये काफी ओवररेटेड है क्योंकि ये इधर उधर चल जाते हैं। तो फिर भी दैट डजंट मीन दे शुड हैव गॉटन नॉक्ड आउट, बट लाइक इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ सरप्राइज। अगर 2015 में भी आयरलैंड से 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी हारे थे तो उनकी थोड़ी आदत है एकदम बढ़ने मारने की। दूसरी बात टेक अवे यार, वो आई डोंट थिंक लाइक द लास्ट वर्ल्ड कप कि यहाँ वो होगा कि आप टॉस जीत गए, आपने चेस किया और आप हर मैच जीत गए। आई थिंक ये जो पहले राउंड के मैचेस हुए हैं, जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, मुझे एग्जैक्टली नंबर्स तो नहीं पता, लेकिन जितना ऑन द सरफेस अगर आप देखें तो बैटिंग फर्स्ट भी टीम्स काफी मैच जीती हैं, बैटिंग सेकंड भी जीती हैं। ऑफ कोर्स आई एम श्योर चेजिंग में थोड़ा फायदा, थोड़े नंबर शायद बेहतर हो, बट आई डोंट थिंक इट्स as one-sided as it So a was lot more of a last balanced, hopefully a balanced match. That's it. So let's come to this then.
importance of the power play in the Australian conditions, and is it truly going to be harder for teams to score at the death? Yang mentioned that Chakke Marna is not going to be as easy. So if you guys can briefly touch upon on that, and then tie that into the struggles Pakistan has had in the power play, and whether that'll be one of the challenges that they'll have to overcome to be successful in this tournament. यार ये आई थिंक एक फायदा यहाँ हो सकता है कि जो आप दूसरे ग्राउंड दुनिया में देख रहे हो छोटे होते हैं, वहाँ काफी वो पुलर भी चल जाते हैं, कभी कभी बाउंड्रियाँ छोटी होती हैं. यहाँ ये है कि if Babar and Rizwan can have a decent power play, they can actually do very well in the middle overs, given their running between the wickets. उनकी game So we need sort of specifics. based on What is आप decent क्या consider करेंगे? Oh, decent power play, like I don't know, like 48, let's say 8 and over, right? Because currently I think they're satisfied with 6.5. Even if they can go an 8 and over, I think that would be great, and then they can actually do well in these conditions. Ground बड़े हैं और double काफी निकाल लेंगे, तो उनका एक फायदा हो सकता है. Yang? यार फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन द फर्स्ट, मतलब कि इसमें जो फर्स्ट राउंड में जो मैंने चीज नोटिस की है कि टीम्स जो है काफी कॉशियस हैं, क्या कहते हैं, पावर प्ले में. लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इतना आसान, मतलब कि ऐसी टीम्स, क्योंकि थोड़ी लो क्वालिटी भी होती है उन टीम्स, इतनी हाई क्वालिटी नहीं होती. तो आई थिंक इतना पावर प्ले में तो मेरे ख्याल से जो teams in Super 12 are most probably going to utilize it well. लेकिन डेथ का जैसे मैंने पहले भी बताया कि उधर चांस है कि काफी, क्या कहते हैं, मसला उधर, मतलब कि हो सकता है छक्के मारते, क्योंकि अभी जितनी मैंने डेथ, इसके जितनी राउंड 1 के अंदर जितनी मैंने डेथ बॉलिंग देखी है, काफी टॉप क्लास हुई. आज भी हुई थी काफी टॉप क्लास, कल भी, कल के मैच के अंदर भी, कल के 2 मैचेस में इतनी नहीं हुई थी. लेकिन अगर आप उससे पहले मैचेस को देखें तो काफी मेरे ख्याल से इम्प्रेसिव बॉलिंग करवाई थी सारों ने डेथ में. कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक मैच कोई टीम ऐसे इस वजह से हार गई हो क्योंकि एंड में कोई कुट वगैरह खाई हो. तो मेरे ख्याल से इस बात का थोड़ा, मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं, थोड़ा मुश्किल, इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू स्कोर एट द डेथ फॉर, मतलब कि टीम्स. Chana, let's go to the question now that Parmeet briefly touched on, this question of 4 versus 3 pacers. And if you are going to go with 4 pacers, who is your fourth? Is it going to be Wasim because he can bat a bit? Is it going to be Hasnan because he's had success at the BBL? Do you take the just the 3 pacers and then you're left with 8 overs of spin in the middle? आप लोग इस पर please discussion करें. What are your thoughts? आई थिंक आपको हर मैच में जरूरत नहीं है कि आप चौथा पेसर ले जाएं, because there's a given. When I say fourth pacer, I don't mean instead of a spinner. It's in addition to the existing 5 bowlers. So it's going to be a 6-man pace, 6-man attack overall. But हर मैच में नहीं, और जिसमें आप ले जाएं, आपने बोला कि which one of the two, Wasim or Hasnan? I think it won't be Wasim, क्योंकि Hasnan's value add is with the new ball. Currently in the team you have Shaheen and Nasim who are going to take the new ball. So at max, Hasnan can bowl 1 over in the power play. Let's say if he was picked as the 4th pacer, and even if he does bowl in the power play, he'll probably bowl maybe the 5th and 6th overs by when the swing is usually gone. So I don't really see the value of playing him, क्योंकि वो फिर एंड में वो थोड़ी कुट ज्यादा खा लेता है, especially. Would you play all 4 against India? No, because I think with them I'd be fine with the current 5 players, Shaheen, Naseem, Haris, Shadab and Nawaz, because वो left arm spin के against थोड़ा slow score करते हैं, इसलिए. And if anything, they like more pace on the ball. Surya Kumar Yadav, Kohli, Sharma, these are players who play well against quicker bowlers, especially bowlers above 140, I think. They have a high average and strike rate. Crick उसका है, कोई chart है, काफी दफा reshare हुआ है, which is why in that match specifically.
All right, Yang, your thoughts, 4 versus 3 Pacers, and what would you do against India? यार अब एक चीज जो मैंने नोटिस की है इस पहले राउंड के अंदर, मुझे पता ज्यादा से कोई we shouldn't probably look that much into it, लेकिन since it was part of the World Cup, you should. तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि अगर आपकी टेल थोड़ी लंबी है, then you are going to struggle. And personally, I do not trust मोहम्मद वसीम जूनियर with the bat. और आपको तो मिडिल ऑर्डर की हालत पता ही है कि क्या है. तो मेरे ख्याल से कि they should probably play as many, मतलब कि अगर 4 वर्सेस 3 के अंदर अगर ये लोग ये चाह रहे हैं कि कोई बैट्समैन ड्रॉप करें और उसकी जगह वसीम को लेकर आ जाए या हसनैन को लेकर आए, आई थिंक दैट्स रियली रिस्की. ये इसका मतलब क्या है कि आपके ओपनर होंगे क्या कहते हैं, बाबर आजम. यार मिस्टर यांग, लेकिन ऑल आउट तो आजकल पाकिस्तान को इस साल में एक दफा ऑल आउट होती होगी. आपकी अप्रोच ऐसी है कि आपके कौन से नीचे वाले बैट्समैनों की मुश्किल से यार बैटिंग आती है. अगर हो गए आपको कॉन्टिजेंसी यार प्लान तो अगर मगर बनाना में तो आप फिर 50 में भी आउट हो सकते हो ना ऐसे तो. यार. लेकिन अगर इतनी यार रेयरली चीज हो रही है. ये जो आप बात In fairness, there was a stretch there, if you may remove the Naseem heroics against Afghanistan, where Pakistan got all out basically 3 out of the last 4 in that end of the Asia Cup, beginning of the England series. There was a stretch of 3 games in a row where I think they got नहीं, all out. लेकिन So है to be थोड़ा fair, मसला है. नहीं, थोड़ा मसला है, लेकिन if you think that अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसी टीम है which is going to struggle against पेसर. वो पेसर्स को लगा देते हैं. वो क्या कहते हैं, आपके साथ उनके जितने ही मैचेस हुए थे, हाँ ओपनिंग में वो स्ट्रगल, दे डू स्ट्रगल अ बिट इन ओपनिंग ओवर्स, लेकिन बाद में वो लोग डेथ वगैरह में वो या मिडल हाँ ओवर. नहीं, इंडिया के साथ तो मेरा भी यही व्यू है कि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी टीमों के साथ आप अगर आप कर जैसे आप सकते हैं. और नेदरलैंड्स, साथ में क्योंकि जो और sadly, uncle, to your point, okay, like although that 4 match stretch, but the thing is, if in most of those games, one tail ender or the other made sure you either won the match, got a comparative score, or something or the other, right? Our tail enders are actually better than most tail enders. सही है. Even Dhani, who's not in the team, but like all of these tail enders, they can actually impact. शाहीन ने भी PSL में आपको दिखाया हुआ है. हारिस राव भी छक्के मार लेता है. नसीम शाह का आपको पता है. So like all of these, even if Wasim, if he comes in, he's a better batsman than the 3 I just mentioned. So even if उनकी बारी आती है, they're more than capable of making sure कि you get the 20, and in some cases, and whenever they have gotten a chance to bat, they actually score faster than the rest of your team because they try to hit. So I wouldn't be too worried. fair enough. And then briefly, you touched on this earlier, Parmeet, about Nawaz and his bowling potential struggles in Australia. आप उसको कैसे, how would you handle his quota of bowling? Would you do it based on team by team matchup, and then specifically India ke khilaf, how would you use him? India के खिलाफ तो like I said, because I don't want a fourth pacer. वहाँ तुम बस simple होगा, depending on the conditions and whatnot. If you're confident, you should give him an over in the power play, depending on who's on strike. Especially if सूर्य कुमार यादव को आप पावर प्ले के अंदर ले आते हैं, तो आपको नवाज को देना चाहिए, क्योंकि again I think he started the lowest strike rate for Surya Kumar Yadav is against left arm spin. So to ensure he doesn't get to a quick start, I would put him in. इवन और दूसरे भी जो ओपनर है ना उनके, या जो वन डाउन है, वो लाइक लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट इतना तेज नहीं खेलते. स्पेशली कोहली वर्सेस स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन इज अ लॉट लोअर. तो मैं तो कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी उसके ओवर निकाल सकूं बेहतर है. एंड लाइक अगेन, आपने एक इशू देखा होगा रिसेंटली कि ये अगर 1 के 6 ओवर पावर प्ले पेसर से करा देते हैं ना, so this lack of flexibility hurts them later on, where they try to bowl 8 overs of spin in a row right after the power play, which I That's I don't think mentioned is earlier. strategy. Jo 8 overs in a हाँ, row of spin will be, you should especially you agar should in definitely a bowl rain one shortened over match, of Nawaz. it will really hurt them. हाँ, you should definitely bowl 1 over of Nawaz in the power play, and you should save 1 over of Shadab for the death. जब भी उसने डेथ पे 16 या 17 ओवर कराया है, मुझे याद नहीं पड़ता कि उसने कोई मार खाई हो, because of course he's a leg spinner. Not everyone can read leg spinners these days.
So like that can allow you to add in 2 hours of नहीं, pace in the लेकिन middle overs. हसन चीमा कह रहा था एक स्पेस के अंदर, वो ये कह रहा था कि शादाब जब भी डेथ के अंदर उसने बॉलिंग करवाने की कोशिश की है तो वो उसने असल में T20 ब्लास्ट के अंदर उसने करवाने की कोशिश की थी डेथ के अंदर, तो वो काफी वो रन लीक कर लेता था। यार मुझे तो T20 ब्लास्ट याद है, कोई उसने 5-6 रन खा रहा था, तो आई एम यार श्योर अब वो मेरे पास वो कोई जो कह रहा है, अब मुझे अब नहीं I didn't होगा, लेकिन follow अभी that chat, रिसेंटली you know. अगेंस्ट न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड वाली ट्राई सीरीज में आई थिंक वो 16 ओवर करा था। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो 18th 19th या 20th करा है, but he can bowl the 16th over. He's more than capable of doing that. That allows you to bowl 2 overs of pacers between overs 7 and 15, and you don't have to bowl those overs, नहीं, but लेकिन sometimes you have I think 16th or 16th over or 17th over, I don't think they are part of death bowling. Death bowling is वो है मेरी basically जान, 90. last 5 overs are considered death. अब भाई लास्ट 5 ओवर कैसे हो सकते हैं डेथ के यार अंदर? तुम अजीब अखरोट इंसान हो बहनचो, तुम इतनी ट्वीटें पढ़ रहे हो Chale, let's फुटबॉल पे। move on. Next question is Fakhar hasn't probably not ready. Do you play both Shan and Heather? How do you guys approach this, or is it matchup dependent on the team? Because historically, at least in last year's T20 World Cup, Pakistan chose an 11 and basically played that same 11 every game. If he is Yang, you not first. fit, हाँ यांग आप चलिए। यार मेरे ख्याल से तो अब मुझे आई एम नॉट श्योर कि व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन फखर जमान। ये तो मेरे ख्याल से उनके जो नंबर 1 फैन है मिस्टर परमीत साहब, वो ही इसके ऊपर ज्यादा बता सकते हैं कि उनका क्या है। लेकिन Assume करें कि वो नहीं खेलेंगे. He's not going to. He hasn't really participated in any of the warm-up matches. So assume अच्छा, करें he's तो not वो ready. नहीं है, so he's So then basically go so for. basically he's not playing. तो but with शान, अब शान का मसला ये है कि उसको हुआ कंकशन, even though there was nothing in the MRI स्कैन या जो भी स्कैन वैन होते हैं उसके अंदर, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है कंकशन की कि समटाइम्स इट कुड बी अ केस ऑफ डिलेड कंकशन। आपको पहले नहीं ज्यादा सिम्टम्स होते, लेकिन 1-2 दिन बाद आपको मतलब कि थोड़े इफेक्ट्स, थोड़े सिम्टम्स और थोड़े आफ्टर शॉक्स लगने शुरू हो जाते हैं दिमाग में जब आपको ऐसी इंजरी होती है। बस सादी अंकल ही ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि तो अब अगर वो है कि अगर ये नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल से देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। बट अगर ये फिट है तो मेरे ख्याल से दोनों शान और हैदर दोनों को ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इवन दो शान हैज नॉट बीन दैट ग्रेट इन T20, वो इसके स्ट्राइक रेट्स और लो है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में मैंने जैसे कहा कि आप छक्के वगैरह इतने लगा नहीं सकते, तो आपको गैप्स वगैरह भी ढूंढने पड़ेंगे और स्ट्राइक रोटेशन भी करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आई थिंक शान कुड बी of some use in this T20 World Cup. And just as a point of clarification for your fans, we are recording this in just after midnight in Pakistan and in the early afternoon on Friday in the US. So this is after the news has already been broken about Shan Masud potentially having a concussion. Parmeet, your take? If Shan is fit, I guess he should play because Fakhar Zaman ने तो खेला ही नहीं है since I don't know when. So I guess उसको खिलाना is not reasonable. If he has a concussion, then you have a choice between Khushdal and Haris, or maybe Haris is in the reserves. Haris is in the reserves. So either आप शान को स्क्वाड से निकाल के उसको रिजर्व में डाल दो. I don't know how that works. The criteria of how someone from the reserves come in, but I guess Khushdal खेलेगा फिर, which again I don't mind. He hasn't played well, but I don't think he's as trash as people think he is. But जितना पाकिस्तान है वो शान को ये दूसरी टीमों की थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच होती है। फाफ डुप्लेसी को जब कंकशन हुआ था वो पता नहीं कितना टाइम बाहर चला गया था, यहाँ बंदे को पानी पिला के बोल दें भाई खेल। तो आई थिंक as long as he can walk on his 2 legs, they'll play him. Shall I question then for you guys, if we remove Babar, Rizwan, and the 3 fast bowlers, who is the one player that success in this World Cup is dependent most on? Interesting. यार
This is more of a rapid fire, so Parmeet, you have to. Shadab Khan. Very good answer. यार Yang, I think my answer is also same, no different. लेकिन मेरे ख्याल से हाँ मुझे भी लग रहा है कि शादाब नहीं मैं actually I think नवाज how can it be no different? You are known as a contrarian. You have to do better. नहीं वो मैं वही मैं सोच रहा था मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो मुझे लगा कि आई थिंक कि ये जो नवाज है आई थिंक वो शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि उसकी जो बैटिंग मुझे आई थिंक पर्सनली it's kind of an unpopular take but I think his batting is better than शादाब तो जो उसकी बैटिंग होगी उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करेगी पाकिस्तान की टीम अगर if he has a bad tournament and then I think it will be curtains for Pakistan unfortunately even before the semi-finals. Two very good आप answers. बोल रहे हैं कि अनपॉपुलर टेक लेकिन आप शायद हो अनपॉपुलर लेकिन आपकी बात from one point makes sense. Shadab's strong suit is hitting against spin, not versus pace. Whereas नवाज को at least इतना recently देखा है pace को मार लेता है तो आपकी ठीक है आपकी बात. That's a two-part question. What makes this a successful tournament for Pakistan? And what are your predictions for Pakistan? यार success in my mind is final at least क्योंकि सेमीफाइनल तो आप बहुत खेले हैं बहुत ज़्यादा खेले हैं और आप बहुत हारे हैं सही है तो आपको एक कदम आगे लेना पड़ेगा आई एम नॉट स्पेसिफिकली गोइंग बैक टू लास्ट ईयर बट आपको लाइक यू नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड प्ले मोर फाइनल्स वी डोंट प्ले दैट You need to win a knockout match is what you're saying. या एग्जैक्टली वी नो जो लाइक आई फील लाइक जो क्वार्टर फाइनल होते हैं वो हम जीत जाते हैं 2011 में 15 में लेकिन जब सेमीफाइनल तक आते हैं हमारी पैक हो जाती है सो final is what I would like at the very least. For me, that's success. And what will happen? I'd say probably semi-final exit is realistic, I guess. Yang, same questions. यार आई थिंक मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का जो ग्रुप है इट्स रियली इजी आई थिंक इसके अंदर सेमीफाइनल तो पहुंच ही जाएगी तो And how is it easy? यार क्योंकि आपके पास साउथ अफ्रीका और इंडिया है ठीक है ना तो वो तो साउथ अफ्रीका के पास पाकिस्तान और इंडिया है यार इंडिया के पास साउथ अफ्रीका ये क्या बात हुई यार आप दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन करें ना दूसरे ग्रुप यार बात हम हमारे मैचेस फिलहाल दूसरे ग्रुप के साथ थोड़ी हैं हमारे तो अपने ग्रुप में है अपने ग्रुप में अपने ग्रुप में तीनों टीमों की सेम डिफिकल्टी है मैं इस ग्रुप की बात करूं मैं कौन से उस ग्रुप की बात करूं मैं कह रहा हूं ये ग्रुप के अंदर आपके पास वो चांस है कि आप एक मैच अगर आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन अगर तो आप क्या कहते हैं यू कैन बेसिकली मतलब कि आप उसको क्या कहते हैं उससे आप रिकवर कर सकते हैं अगर आप नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे और इवन बांग्लादेश आई थिंक बांग्लादेश इज वर्स देन both of those sides in T20. Acha, you're waffling. What makes a successful tournament and what's the prediction for Pakistan? यार मेरे ख्याल से कि जो क्या कहते हैं आई थिंक मेरे भी ख्याल से कि फाइनल तक तो पहुंचना ही चाहिए अगर एनीथिंग लेस देन दैट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अ सक्सेस लेकिन अगर मैं दूसरी साइड से देखूं तो आई थिंक क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका है तो मेरे ख्याल से सेमीफाइनल भी पहुंचना काफी एक बड़ी अचीवमेंट ही होगी क्योंकि पाकिस्तान की टीम recently ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्यादा खास Chana, the one foot in each boat for you. And what is your prediction of what actually will happen? यार मेरे ख्याल से पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान विल स्ट्रगल अगेंस्ट मिनोज जो मतलब कि एसोसिएटेड जो लोअर रैंक टीम्स हैं जिसके वजह से इट माइट अफेक्ट देयर नेट रन रेट और अगर एक दो मैचेस बारिश हो गए जिसके काफी चांसेस हैं पाकिस्तान और इंडिया तो इट माइट कम बैक टू बाइट देम तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि शायद सुपर 12 के बाद ही पाकिस्तान की वापसी हो जाएगी लाहौर एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट या जिस जगह पे भी मतलब के प्लेयर रहते हैं उस हिसाब से
So on one side, you're saying that it's a very easy group, but on the other end, you're यार easy group predicting है. that they will be मैं out in कहता the कि Super what 12. they should do. नहीं Oh, no, मैं I just want to make sure कि हम लोगों के जो listeners हैं, they understand the logic and जो यार आपकी मैं जो एक reasoning सेकंड है. आपने मेरे ख्याल से आपने बात सुनी नहीं है. मैं ये कह रहा था कि जो उनको क्या करना चाहिए, they should be able to defeat those teams with ease. लेकिन as we have noticed कि पाकिस्तान काफी मैचेस जो मतलब कि जो आप बिल्कुल जीतने आपको आराम से जीतने चाहिए, वो भी उसके अंदर भी आप लास्ट ओवर तक ले जाते हैं. ये आपको मसला करेगी. एंड ड्यू टू दैट आई थिंक इंडिया और साउथ अफ्रीका ऐसी टीम्स है जो छोटी टीम्स होती हैं उनको ये नहीं छोड़ती. ये उनकी टीम्स को बेशक बड़ी टीम से जितने मैचेस हार जाए बाकियों को ये मार देती हैं. तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है. चलिए. Good. So next question. Assuming the India match is rain shortened, very quickly, both of you, rapid fire, who does that favor? Say it's a 15 over aside. Shortened match, India. It'll almost certainly be a shortened match. So India for you and Yang for you. यार अब इसके अंदर मसला ये है कि क्योंकि अगर शॉर्टन मैच है तो मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान को तो बैटिंग करवाने की जरूरत नहीं है. I think आपको रैपिड फायर के अच्छा नहीं, मुझे पता है. आई थिंक के इंडिया को शायद फेवर करेगी क्योंकि वो कोई वीक लिंक से निकाल देंगे, आपके बॉलिंग अटैक से कोई अटैक वगैरह कर लेंगे. चलें, last question then for both of you from my end before I leave it to open discussion. Overall, who is going to win this World Cup? Yeah, Pakistan. यार मुझे जो लग रहा है, आई थिंक यार कौन सी टीम जीत सकती है. आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन. मुझे लगता है कि Question was not who is not going to win, who is going to win. मैं दिमाग के अंदर प्रोसेस कर रहा हूँ ना कि कौन सी टीम जीत सकती है. आई थिंक इंग्लैंड इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप क्योंकि उनकी काफी बैलेंस साइड लग रही है उनकी, मुझे जहाँ तक मुझे नजर आ रहा. तो आई थिंक इंग्लैंड इज माय फेवरेट्स टू विन. Chaliye, very good, both of you. I enjoyed this discussion. Lots to talk about. Any last parting thoughts from each of you? तो मिस्टर यांग, आपने जितने भी आज ओपिनियन दिए हैं, ये हफ्ते बाद कितनों पे आप बैक ट्रैक कर जाएंगे और ऑपोजिट आपका ओपिनियन हो जाएगा? यार ये तो आपको मेरे ख्याल से अगली एपिसोड जब आप देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि कितनी बातें चले सही है ना. अगर फाइनल में पहुंच गए तो जो है ना उससे पहले एक दूसरा एपिसोड करेंगे, तब देखेंगे आपका क्या कहना है. फाइनली मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड कप के बाद हम we will most probably Nay, we almost certainly have to do a pre-semi-final episode, short. Yep. Yeah, basically. If only because Yang predicted they'll go out in the Super 12s. हाँ, ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफी कुछ हो सकता है मेरे ख्याल से. तो मेरे भी ख्याल से कि although मेरे ख्याल से I think this prediction of yours is likes, retweets, and the reaction that you want your Twitter community, it is not actually coming from your heart brain axis. यार नहीं, ये गलत बात है. मेरे नहीं ख्याल से कि मुझे कोई लाइक्स वगैरह से कोई फर्क पड़ता है या रीट्वीट से. लेकिन मेरे जो ख्याल से मुझे जो लगता है कि अब मुझे पता नहीं आप किस वाली प्रेडिक्शन, पाकिस्तान वाली की बात करें या इंग्लैंड वाली की बात. The Pakistan going out in the Super 12s. या वो आप अगर उसकी लॉजिक अगर देखें तो मेरे ख्याल से परमीत भी मेरे साथ एग्री करेगा कि अगर समझे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच वॉश आउट हो जाता तो बात तो फिर नेट रन रेट पे ही आएगी ना. तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से कि नहीं, नेट रन रेट की बात नहीं है. फिर आप अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को भी हरा दे तो साउथ अफ्रीका के लग सकता है. तो ये भी तो आप सोचें ना, जरूरी थोड़ी है कि इंडिया हमें हराएगी, साउथ अफ्रीका इंडिया को हराएगी. मतलब वो गारंटीड नहीं है ना, बहुत परम्यूटेशन. यार लेकिन होने के चांसेस है क्योंकि जैसे साउथ अफ्रीका का आपको पता है, साउथ अफ्रीका
स्ट्रगल करती है। वर्ल्ड कप में वो जीते जीते मैचेस भी हार जाती है, जैसे तो फिर हमसे भी हार जाएगी तो और आसान हो नहीं जाएगा नहीं हमारे। वो नहीं ना, वो इतना कंसिस्टेंटली दे आर नॉट दैट पुअर कंसिस्टेंटली, वो क्या कहते हैं उस तरह करके होते हैं ना कि मिस्टर वो यांग हम उन्हें वैसे फैंटा लगाते हैं टूर्नामेंट्स में। या फैंटा लगाते हैं, हाँ आप लगा सकते हैं उनको फैंटा, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उस नहीं हिसाब लगा सकते नहीं, हम लगाते या हैं उनको आईसीसी टूर्नामेंट्स में, हम उनका फैंटा लगाते हैं जैसी भी उनकी टीम हो। या हाँ वो बात सही है, वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन मेरे ख्याल से कि नेट रन रेट पे मुझे लग रहा है काफी बात आ जाएगी एंड में, जो मुझे लग रहा है अब वो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इंडिया विल टॉप द ग्रुप, पाकिस्तान विल बी सेकंड और साउथ Africa will be third, not because of net run rate, but because they'll just have lower points. They'll lose to both India and Pakistan. This is why we watch the games. Can I thank you very much, both of you? And जी शुक्रिया inshallah, आपका कि we will आपने have. बहुत अच्छी होस्टिंग की शॉर्ट नोटिस पे। यार और इस आपने टाइम प्लीज, थैंक यू मिस्टर सादी अंकल, आपने जो मुझे इनवाइट किया स्पेस इनवाइट क्या, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आपका है ना, आई थिंक आप अपने नहीं लेकिन आपको क्या चल- जो भी है ना, जो भी बात है इन्होंने इनवाइट किया, जो भी आइडिया वगैरह ये लेकर आए, जो भी है कि कम से कम मुझे भी थोड़ा कोई पॉडकास्ट में बोलने का मौका मिला है, वरना कोई मुझे तो लेता नहीं है, तो आई थिंक You can always speak in your own podcast. ये बहुत बहुत बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल 100% इसके अपने ख्याल से 100 वाला रिएक्शन नहीं, ये जो तालियों वाला है वो बनता है, लेकिन मेरे ख्याल से कि हाँ ये काफी, मेरे ख्याल से अब हम लोग एक अगली जो हमारी जो पॉडकास्ट है वो हम प्री नॉकआउट स्टेजेस करेंगे, और फिर हम लोग डिस्कस करें कितनी बातें मेरी सच्ची निकलती हैं, कितनी बातों से मिस्टर परमीत क्या कहते हैं बैक ट्रैक करते हैं, और सादी अंकल कैसी, तब तक कैसी इनकी होस्टिंग रहती है। तो आई थिंक ये बात बस मुझे कहनी थी। सादी अंकल Really, everyone, have a wonderful weekend. Lots of sports. We have United Chelsea. You have obviously India Pakistan. You have NBA basketball. You have NFL, and of course you have the Yankees against the Astros in the World Series of baseball. So lots of stuff for lots of people this weekend, and of course Diwali as well on Monday, or actually not Monday. This weekend coming up. So enjoy, everyone. हैप्पी दिवाली, जो भी हैप्पी दिवाली एंड ऑल, एंड मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स वीक होने लगा हमारे लिए, और काफी हम क्या कहते हैं एंजॉय करेंगे, और ये हाँ काफी एफपीएल में मिस्टर यांग भंड मारने वाला है, यार तो आप देखें एफपीएल की बात ना करें, मैंने एक वो वाली फैंटेसी भी लगाई हुई है, वो उसके अंदर भी आप प्लीज ज्वाइन कर हाँ लो। हाँ वो मैं ज्वाइन कर लूंगा। Chaliye, Khuda Hafiz, everyone. Till next time.